Indonesia is so beautiful. We like Indonesian people, so thankful they support us very well. Oh yeah, music. Hello viewers, welcome back to Desi Family Reaction. तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो की मदद से देख रहे होंगे। मैं अदनान अलवी, मैं हूँ तौसीफ अलवी, मैं हूँ कबीर अलवी। तो दोस्तों हाजिर है एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आपके लिए। और आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है, इट्स इंडोनेशियन वीडियो एंड सो ब्यूटीफुल वीडियो एंड एंजॉयबल वीडियो। यस। और आज की जो हमारी वीडियो है, ये सजेस्ट जिसने की है उनका नाम है एम अकबर। तो इनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो टाइटल है, पहले थैंक यू सो मच एम अकबर दे रिक्वेस्ट आस दिस वीडियो। और हमारी जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है सेवन गन सेमिकन मोजा कोटी तेरी बासर। और देखते हैं इस वीडियो में क्या, इसके बाद हम करेंगे इस पर रिव्यू। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम तीनों की तरफ से इंडोनेशिया पीपल को अस्सलाम वालेकुम। और कबीर भाई जो है आज वीडियो को स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को करें स्टार्ट कबीर भाई। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Oh यार, म्यूजिक वंडरफुल। We'll enjoy. Selamat datang di kota Semarang. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Total luas wilayah kota Semarang adalah 373,70 km persegi atau 1,14% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ini menjadikan kota Semarang sebagai kota terluas di Pulau Jawa, mengalahkan kota Surabaya di urutan selanjutnya dan menjadikan Semarang berada di urutan ke-19 di antara kota dengan wilayah terluas di Indonesia. Total jumlah penduduk kota Semarang pada tahun 2019 adalah 1.814.110 jiwa atau 5,22% dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 34.017.204 jiwa, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Kepadatan penduduk kota Semarang adalah 4.854,54 per kilometer persegi. Kota Semarang memiliki beberapa julukan yang populer, di antaranya Venesia Senjata, Kota Lumpia, Kota Jamu, The Port of Java, dan juga Kota Atlas yang menjadi moto dari kota Semarang ini. Kata Atlas mempunyai akronim aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Di kota Semarang pernah populer penggunaan bahasa pergaulan yang disebut bahasa walikan. Hari jadi kota Semarang ditetapkan pada tanggal 2 Mei tahun 1547 atau berusia 473 tahun pada tanggal 2 Mei tahun 2020 ini. Ini menjadikan kota Semarang sebagai kota tertua ke-7 di Indonesia setelah kota Palembang, Salatiga, Kediri, Magelang, Surabaya, dan Jakarta. Kota tertua selanjutnya setelah kota Semarang adalah kota Medan, Makassar, dan kota Bandung. Suku bangsa utama yang bermukim di kota Semarang adalah suku Jawa, Sunda, Tionghoa, Batak, Pakistan, Arab, dan lain-lain. Saat ini di kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan terbagi menjadi 177 kelurahan. Ini menjadikan kota Semarang sebagai kota dengan jumlah kelurahan terbanyak di Indonesia. Ini juga berarti kota Semarang memiliki Pak Lurah dan Bu Lurah sebanyak 177 orang. Di bawah kota Semarang terdapat kota Surabaya dengan 154 kelurahan dan kota Medan dan Bandung dengan masing-masing 151 kelurahan. Jakarta yang terbagi menjadi 5 kota dan 1 kabupaten, total seluruhnya terdiri dari 267 kelurahan. Kota Semarang terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta atau 312 km sebelah barat Surabaya
atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin via udara. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam dan kata arang yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanarang I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang di dekat pelabuhan Bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan satu dari 3 pusat pelabuhan penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa bersama kota Jakarta dan Surabaya. Beberapa makanan khas yang terdapat di kota Semarang diantaranya nasi ayam Semarang, bandeng presto, tahu gimbal, garang asam, mie kopiok, soto bangkong, tahu petis, nasi goreng babat gongso, lumpia Semarang, tahu pong, pisang pelangi, dan lain-lain. Pada tahun 2020 ini, kota Semarang mendapatkan penghargaan sebagai kota wisata terbersih se-Asia Tenggara dalam ASEAN Tourist Forum yang digelar di Brunei Darussalam. Kota Semarang juga meraih penghargaan sebagai kota terbaik dalam perencanaan pembangunan, mengalahkan kota Yogyakarta dan Padang yang masuk di urutan selanjutnya. Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020. Pada tahun 2019 kemarin, Kota Semarang berhasil memboyong 9 kategori penghargaan Kota Menuju Cerdas dari Gusmart 2019 yang digelar oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). 9 kategori tersebut meliputi rating ekonomi cerdas, sosial cerdas, lingkungan cerdas, kesehatan cerdas, keamanan dan kebencanaan cerdas, pengembangan dan pengelolaan kota, kesiapan pemerintah digital, kesiapan integrasi, serta rating puncak kota menuju cerdas. PSIS Semarang merupakan satu-satunya klub sepak bola profesional di kota Semarang. Pada musim 1999, PSIS Semarang berhasil menjadi juara Liga Indonesia. Semarang United FC merupakan klub sepak bola yang mengikuti turnamen dalam ajang Liga Primer Indonesia. Kawasan Mega Urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur, yaitu akronim dari Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi serta Kabupaten Grobogan, berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa, sekaligus sebagai wilayah metropolitan terpadat keempat setelah Jabodetabek di Jakarta, Gerbang Kertosusila di Surabaya, dan Bandung Raya di Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Batas-batas wilayah kota Semarang adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Beberapa oleh-oleh khas yang berasal dari kota Semarang adalah lumpia, roti ganjel rel, jambu Semarang, wingko babat, mari wijen, dan bandeng presto. Beberapa kota di dunia dan di Indonesia yang menjadi mitra kerjasama atau kota kembar dari kota Semarang ini adalah kota Amsterdam dan Rotterdam di Belanda, kota Venesia di Italia, kota Denhai dan Fuzhou di Republik Rakyat Tiongkok, kota Brisbane di Australia, kota Da Nang di Vietnam, kota Tallahassee di Florida, Amerika Serikat, kota Melaka di Malaysia, kota Tegucigalpa di Honduras, serta kota Jakarta dan kota Surabaya di Indonesia. Semarang terdapat sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta. Berdasarkan peringkat universitas di Indonesia, menurut Webometrik terdapat 6 universitas di Semarang yang termasuk dalam 100 universitas terbaik Indonesia. Di kota Semarang terdapat 3 perguruan tinggi kedinasan, yaitu Akademi Kepolisian, Politeknik Ilmu Pelayaran Nasional, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Selain itu juga terdapat 5 perguruan tinggi negeri di kota Semarang, yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Selain itu juga di kota Semarang terdapat 54 perguruan tinggi swasta.
Bandar udara yang melayani kota Semarang dan sekitarnya adalah Bandar Udara Nice, Internasional yeah, Jenderal Ahmad Yani yang juga terletak di wilayah kota Semarang ini. Nama bandara ini diambil dari salah satu pahlawan revolusi Indonesia, Ahmad Yani. Pada awalnya Bandara Ahmad Yani adalah pangkalan udara TNI Angkatan Darat, dahulu lebih dikenal dengan Pangkalan Udara Angkatan Darat Kalibanteng. Berdasarkan surat keputusan bersama Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri Angkatan Darat tanggal 31 Agustus tahun 1995, maka Pangkalan Udara AD diubah statusnya menjadi Pangkalan Udara Bersama Kalibanteng Semarang. Namun, karena peningkatan frekuensi penerbangan sipil, maka pada tanggal 1 Oktober 1995, Bandar Udara Ahmad Yani Semarang menjadi salah satu bandar udara di bawah PT Angkasa Pura. Bandara Ahmad Yani berubah menjadi bandara internasional pada tahun 2004, setelah Garuda Indonesia membuka rute Semarang-Singapura. Dari sisi moda transportasi laut, di kota Semarang terdapat pelabuhan laut bernama Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas atau terkadang ada yang membacanya dengan Pelabuhan Tanjung Emas dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 sejak tahun 1985. Pelabuhan ini merupakan satu-satunya pelabuhan di kota Semarang. Semarang memiliki 2 stasiun kereta api, yaitu Stasiun Semarang Tawang untuk kereta api kelas bisnis dan eksekutif, serta Stasiun Semarang Poncol untuk kereta api kelas ekonomi dan angkutan barang. Demikian penjelasan umum tentang Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dikutip dari Wikipedia dan beberapa media online lainnya. Jika terdapat kekeliruan dalam menyajikan informasi ini, mohon dikoreksi. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कमाल यार, नाइस माइंड ब्लोइंग यार, सब देखो कितना अच्छा, बहुत ही हाई लेवल पर Yes. उसने व्यू कैप्चर किया है। कमाल हो गया। ओए म्यूजिक एंजॉय भाई, आपने एंजॉय कर रहे, नाइस यार, क्या म्यूजिक इज आल्सो फैंटास्टिक। नाइस यार, नाइस, वंडरफुल। Oh, amazing यार, Indonesia Yes. also good यार। Indonesia is very beautiful, yes। यार वाह, कमाल। बहुत अच्छा व्यू यार, देखो लाइटिंग्स और वेरी ब्यूटीफुल, वाह, सुपर कूल यार, फैंटास्टिक। नाइस यार, अमेजिंग, कमाल की वीडियो हमारी वंडरफुल थी यार, बहुत पसंद की है आज, बहुत खूबसूरत थी यार, बहुत ही अच्छी वीडियो थी हमारी, मैंने बहुत एंजॉय किया यार, कमाल की वीडियो थी और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आज हमने विजिट किया है इंडोनेशिया का शहर है ये सेमरिगन सिटी और बहुत ही अच्छा सिटी था, एंजॉयबल था, ड्रोन व्यू इज सो ब्यूटीफुल, अच्छे अच्छे उन्होंने व्यू कैमरा मैन ने कैप्चर किए हैं, बहुत कमाल के व्यू। जिधर से उसने कोशिश की है कि दिन के व्यू कैप्चर किया, उधर से उसने रात के भी व्यू कैप्चर किया। नाइट व्यू इज फैंटास्टिक, आई लाइक। साथ में ही उन्होंने काम। हाँ, तो अभी तौसीफ भाई आपको वीडियो हाँ, ये कैसी वीडियो बहुत कमाल की, एंजॉय हम तीनों ने की, बहुत अच्छी लगी वीडियो हमको। इसमें उन्होंने म्यूजिक बैकग्राउंड वेरी ब्यूटीफुल के हम फुल एंजॉय करने वाला था। इसमें बहुत से उन्होंने व्यूज किए हैं कैप्चर, कैमरामैन ने बहुत अच्छा रहा है। इसमें उन्होंने देखो बिल्डिंग्स, जो लाइटिंग देखो कितनी अच्छी कमाल की थी, बिल्डिंग्स, नाइट व्यू भी अच्छा थे और सुबह के व्यूज भी अच्छे थे, बहुत अच्छा है मॉर्निंग व्यूज। तो बहुत अच्छा लगा यार, वीडियो में हमने बहुत एंजॉय की। तो कब चलते हैं भाई कबीर के पास, क्या आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, नाइट वाला भी बहुत अच्छा लगा। और उसी टाइम पे उन्होंने दूसरा भी दिखाया कि ये सुबह का टाइम है और नाइट डे और नाइट का भी, हाँ, दोनों व्यू अच्छे थे और रोड वगैरह ये वो सब कुछ अच्छा था। अच्छा, हवा क्या वो फाउंटेन, फाउंटेन है वो, हाँ, लाइटिंग उसकी देखो कितनी वो कमाल भी की अच्छी यार। थी। तो यार एंजॉयबल वीडियो थी, बहुत हमने एंजॉय किया, अमेजिंग वीडियो थी हमारी आज की। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में बताएं और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट में बताएं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन वाली कौन सी आपके लिए लेकर आए। और अगली वीडियो के लिए करें हमारा इंतजार। जाने से पहले इंडोनेशिया इज सो ब्यूटीफुल।
वो लाइक इंडोनेशियन पीपल, सो थैंकफुल दे सपोर्ट अस वेरी वेल। तो अगली वीडियो के लेकर हमारे इंतजार, उम्मीद है कि हम जल्द वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।